हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त सागर एंड आई केम अप विद अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू से इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम essay 705, that is modification to the independent auditor's report. Please note that friend, in an exam all people attend this question, but he or she doesn't get marks. Why this? Because they have proper understanding of this answer but not for presenting this answer. That is, all people know the answer, what is the opinion, qualified opinion, adverse opinion and disclaimer opinion. मतलब कब कौन सा ओपिनियन आएगा ये तो सबको पता है, मगर फिर भी मार्क्स नहीं मिलते. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन. Peoples are follow the presentation, that is charts. And I would like to say, if you are drawing charts in exam, you will be get marks but not get full marks. That's why language is most important. So please note this answer properly in and present this way in exam. When the modification of independent auditor's report, two possibility, the auditor concludes based on audit evidence obtained एफएस आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज उसे एविडेंस मिला है. और दूसरा पॉसिबिलिटी है ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंडक्ट दैट एफएस एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंगली एस 705 क्या बोलता है? ऑडिटर तीन टाइप के ओपिनियन दे सकता है: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. सरकमस्टांसिस के हिसाब से आंसर लिखना है. सो क्वालिफाइड ओपिनियन में दो पार्ट है. देखो, मैंने भी चार्ट ड्रॉ किया है लेकिन मैंने पूरा लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है. अगर आप सेंटेंस में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, चार्ट्स में लिखते हो तो भी फिर भी पूरा लिखो. इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सो क्वालिफाइड ओपिनियन इज divided into two parts. Based on sufficient and appropriate audit evidence, auditor conclude that is misstatement at individual or aggregate are material but not pervasive. और उसका दूसरा पार्ट है, द ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड appropriate audit evidence but auditor conclude that possibility of effect of undetected misstatement could be material but not pervasive. ये दोनों केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा. Auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence based on which he concludes that misstatement individually or in aggregate are material and pervasive to financial statement. Then he express adverse opinion. And last, if auditor unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence on which to based the opinion and auditor concludes that possible effect of undetected misstatement are material and pervasive to financial statement, then he express DOO, that is disclaimer of opinion. Please note the keywords are undetected misstatement, material and pervasive, material but not pervasive, sufficient and appropriate audit evidence. Then he will express which opinion you can write, but these words should be highlighted in exam. That is, which words? Undetected misstatement, material, pervasive, sufficient and inappropriate audit evidence. Please note. Thank you friends. All the best.